नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूं इफ्तिखार कैसर। आज हम यहाँ मौजूद हैं बरतानिया के एक शहर पीटरबरा में। यहाँ जंग और जियो के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, खालिद महमूद जौनवी साहब। उनसे मैं कहूँगा कि शहर का एक मुख्तसर तारफ़ बताएं हमें, यहाँ कितने पाकिस्तानी हैं, कब से आबाद होना शुरू हुए पाकिस्तान? पीटरब्रा की जो इस वक्त आबादी है यानी मुसलमानों की वो 25,000 से ज़्यादा है। और ये यहाँ के जो लोग हैं बाशिंदे हैं वो यहाँ आए हैं 1955 में, चूँकि यहाँ बटा खश्त की सन्नत थी, हमारे ईंटें यहाँ बनती थी, हमारे लोगों को रोज़गार के यहाँ मौके मिलते थे, इसलिए वो इस शहर का रुख किया। अगर शहर का मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मसाइल के अलावा हमारी बहुत सारी कामयाबियाँ हैं जिन पर मसाजिद कितनी है यहाँ? हमारी 5 मसाजिद हैं और अल्लाह का करम है। कौन सी हैं? फैज़ान मदीना और गौसिया मस्जिद। और कारोबार पाकिस्तानी यहाँ पे कौन से ज़्यादातर करते हैं? यहाँ से कैटरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, और उसके अलावा जो प्रोफेशनल शुबों में ये लोग हमारे जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के साथ ही मुंसलिक। और काउंसलर भी काफ़ी सारे हैं, कितने लोग काउंसलर हैं? अल्लाह का करम है कि यहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान 7 काउंसलर हैं। हमारे 2 पहले मेयर रह चुके हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब नदीम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। पहले जो मेयर रह चुके हैं उनके क्या नाम थे? उनके नाम थे मोहम्मद अयूब चौधरी, वो सबसे पहले मेयर यहाँ बने। उनके बाद राजा अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा, वो हमारे मेयर रह चुके हैं। अच्छा। और उसके बाद एक नई नस्ल तैयार हो रही है जो आगे आ रही है लोकल इलेक्शन के लिए। बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, मुझे उनकी सलाहियतों पर एतमाद है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी इंशाल्लाह हमारे शहर की नेक नामी का बायस बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Now I ask the Chief Executive of Peterbrough Council, Gillian Bisley. Thank you for joining us. You'd like to say anything about Pakistani community? Yes, can I just welcome you here today, GeoTV. It's great to have the Jang Forum here, and we welcome you to our city. Well, we've had this community here since the 1950s, and it's grown tremendously over the years. And we know in our last census between 2001 and 2011 that we saw a 75% increase in this community. And we see the community in so many different places, in our schools, in our businesses, on the high street. And if anybody knows me, they know in my office I have a picture of a mosque, and that celebrates the actual influence of this community on the city. We have lots and lots of challenges in the city. We've got 136 languages spoken in our city, but I know that I can turn to my friends in this community when we have difficulties and talk to them and discuss how we resolve those issues. After all, we all want the same. We want a safe place to live, and we want the best for our families. And I know that this community is committed to working with us as a council to that end. I look very much forward to this being a great event for Peterborough and for our community, and in the future I look very much forward to working with this community to make our city the great place that it is. How you find them? They are peaceful citizens and friendly citizens, because since 9/11, all the things are here related to extremism and terrorism. I know through the people that I've met in this community that Islam is a peaceful faith, and I know that the people that I work with are peaceful people, and they work in a constructive and a positive way to make Peterborough a better place. We have great challenges here. We may have robust debate, we may not agree with each other, but it's done with respect, it's done with kindness, and it's done in the best possible way. So I'm of the view that Islam is a peaceful faith, and the community follow its teachings properly. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Now I request leader of the City Council, Councillor Marco Cereste. Thank you very much. Save me the trouble. The same question I'd like to ask you, I asked the Chief Executive about Pakistani community. Well, I've been very close to the Pakistani community. Many of the older ones here who have got grey hair or perhaps no hair at all will remember that I had a business on the corner of Gladstone Street and Cobden Street in 1968. I opened it. My father had already started working from there long before. So I've had a very close relationship with the Pakistani community since I was about 15 years old. I own St. Joseph's Nursery
which is probably full of Pakistani children. And it's a great thing to absolutely have. And in the middle of probably one of the most deprived wards in the city, the nursery has got an outstanding. So there's a really good service. It's a really good service for the people that need it. I mean, I've worked with the community all my life. We've done all sorts of things. The city has a great honour now. We've got the second Pakistani deputy mayor here with Nadeem. He's a great influence in the community, and he's somebody to look up to and respect. And it's just wonderful that our community can have this diversity. And I mean, I love a good curry. Yeah. And so they tell me, how many invitations do you have? All the time. All the time. If I wanted to, I could live on Pakistani food, and I love Pakistani food, as well as Italian food. You know, so as you can probably tell from the spread around the middle of my tray. But you know, to be serious, you like curries, but what about how many of your Pakistani friends like Italian food? None of them refuse when I invite them round mine. And of course, my wife could be a Pakistani wife because she cooks fresh food, only uses good ingredients. And every evening I get a fresh meal, and she welcomes me when I come home. So I'm not sure whether it's right or wrong, but that's what happens. And we've got babies, and I often go around people's homes where I get invited. So it's great. But it's not just about the Pakistani community. Peterborough is about being a cosmopolitan community. And the Pakistani community is just part of that rich tapestry that we have in our city. And it's such a great place to live in. But it's a great place to live in because we all get on with each other, you know. And I mean, last week, some of my officers will tell you, last week I got some horrible, and I mean horrible mail. We called the police in about the mail because I'm supposed to be too close to the Islamic community and I'm too friendly with you, which of course is absolutely ridiculous. It's exactly the way it should be. And the leader of an authority should value all of the various races and religions who live in that city. And I do, and I value the Pakistani community particularly because we've worked so closely together, especially in the past when, dare we say it, there was a need for the Italian community and the Pakistani community to work together. We did. We worked very, very much together for the benefit of our communities and the city. And it's just a great community. If you've not come to Peterborough before, you should come. Peterborough is the best kept secret in the UK. Okay, we'll come in summer. Okay, thank you. अभी यहाँ पे पीटरबरा के डिप्टी मेयर हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब और आपने हमें होस्ट भी किया है। आप पीटरबरा की बारे में बताइए हमें, यहाँ के जो स्पेशल कुछ इश्यूज़ हैं उसके बारे में। मसाइल की अगर बात करें तो मसाइल हैं यहाँ पर, लेकिन मैं पॉजिटिव माइंड रखता हूँ और मैं ज़्यादातर पॉजिटिव बात करूँगा कि हमारी अचीवमेंट भी क्या है। मेरा ख्याल है अगर मसाइल के ऊपर ऑडियंस से कोई और आदमी बात करे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि मेरा जो आज जो रोल है, मैं एक सिविक ऑफिस की तरफ से हूँ और मैं एक न्यूट्रल हूँ और मैं कोई ऐसी डिबेट में कोई बात नहीं करना चाहता कि जो बाद में कंट्रोवर्शियल बन जाए। तो अलबत्ता मुझे ये कहने से अचीवमेंट तो एक तो आप हैं अचीवमेंट जी चलो यहाँ की अपना पाकिस्तानियों की पीठ बाकी अचीवमेंट हाँ बाकी मुझे एक बात कोई कहने से नहीं रोक सकता और दो न्यूट्रल के आपने जो मुश्ताक शेव कराने के बाद आप 20-25 साल जो है ना और यंग हो गए हैं। अच्छा जो अचीवमेंट अफ्तार साहब जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी मसाजिद की तामीर और जो तामीर फ़िज़ान मदीना है, गोसिया मस्जिद है, हुसैनी सेंटर है और इसके बाद इस्लामिक सेंटर और एक आलमा रोड के ऊपर मास्क, बहुत सी मास्क हैं और इसकी जो मेजॉरिटी फंडिंग हुई है वो लोकल कम्युनिटी से हुई है और हमारी जो कम्युनिटी है वो बिज़नेस में भी बहुत आगे जा रही है और लोग जो हैं अपने जो है वो काम काज में मसरूफ़ हैं। और उसके अलावा एक और जो बड़ी अचीवमेंट का मैं इस प्रोग्राम की वसासत से जो स्पेशली जिक्र करूँगा वो दो मैं बातें करूँगा। एक तो नंबर ये है कि पीटरबरा जो है वाहिद सिटी है पूरे बरतानिया में जिसकी मुस्लिम और पॉलिटिकल जो कम्युनिटी लीडरशिप है उसके लोकल अथॉरिटी के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मिसाल के तौर पर वाहिद शहर है कि हमारे यहाँ अगर कोई फोतगी हो जाए, कोई फोत हो जाए तो आपको पता है कि हमारी मजहबी रिक्वायरमेंट है कि जितना जल्दी हो सके जो है वो उसको जो है मरने वाले को दफनाया जाए। हमारी मजहबी
ضرورت بھی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہمارا آدمی کوئی ویکینڈ ہو, چاہے کرسمس ایو ہو, نیو ایئر ہو, ہم اسی وقت جو اتھارٹیز ہیں ان کو فون کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ہمیں اسی وقت وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. اور پھر سنڈے کو, اور چاہے کرسمس ڈے ہے چاہے نیو ایئر ایو ہے, وہ اسی روز جو ہے وہ ہم بیریل یہاں پر بھی کر دیتے ہیں. اگر باڈی پاکستان لے جانا ہوتی ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ اسی روز ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہے ہماری اقرا اکیڈمی, کہ جو برطانیہ میں کم شہر ایسے ہیں. جو میں دوبارہ آؤں گا تاکہ بہت ساری باتیں ہوں گی, تو ساری اچیومنٹ اگر بیان کرتے رہے تو سارا پروگرام ختم ہو جائے گا. ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے. اب یہاں کے جو ایشوز ہیں, یہاں کا جو بڑا مسئلہ, اس کے اوپر کون بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, حقیقی مسائل کی طرف آپ آنا چاہیے. میرا نام ناظم خان ہے, کاؤنسلر ہوں اور لیبر گروپ کا لیڈر ہوں پیٹربرا کا. ایشو جو ہمارے لیے ہے, ہمارا جو وارڈ ہے سینٹرل وارڈ, یہ سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ وارڈ ہے. اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم دن ہاں جو محنت کر رہے ہیں کہ اس کو ری جنریٹ کیا جائے. اور ری جنریشن کے لیے اتنی مقدار رقم کی ضرورت ہے جو سٹی کونسل جو ہے وہ ابھی تو اپنے ہاتھ سے تو جو پرووائڈ نہیں کر سکتی, وہ نیشنل گورنمنٹ سے مل سکتی ہے اگر ہم کوشش کریں گے. لیکن نیشنل گورنمنٹ کا کیا حال ہے کہ اس کے پاس بھی آج تک فنڈ نہیں ہے. سو اس کے لیے ہمارا جو ہے نا سب سے زیادہ دشواری ہے. فنڈ بلکہ کم ہو رہے ہیں, ہر جگہ کٹ ہو رہے ہیں, ہر جگہ کٹس وغیرہ ہو رہے ہیں, لیکن اس سے کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے. کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے نا پرٹیکولرلی ہماری ووٹ کا جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, میں اور بھائی ندیم بھائی, یہ سب سے پورے انگلینڈ میں یہ 10 نمبر میں آتی ہے موسٹ ڈپرائیوڈ ووٹ. سو یہ جو بورڈ ہے نا, اس پر جو کنسنٹریشن, مارکو اچھا آدمی ہے, دوستی بھی ہے اس سے ہماری, لیکن بیچارے کے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہمارے مسائل حل کیے جا سکیں. اس کی وجہ تاکہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں دیتی. سینٹرل گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. تھینک یو جی. چلیے, میرا نام راجہ اختر ہے, میں صاحب کا میئر رہا ہوں. یہ جو ناظم بھائی نے کہا کہ ڈپرائیوڈ وارڈ, میرے خیال میں پچھلے ہفتے بھی ہماری جو لوکل نیوز پیپر ہے اس میں مینشن کیا گیا کہ یہ 4 ملین سٹی کونسل پر فنڈنگ کرے گی اور 8 ملین گورنمنٹ سے لیں گے. اور جو ہمارے پرانے مکان ہیں, کیونکہ ان کی ہیٹنگ بہت لوز ہو رہی ہے, اس لیے وہ میرے خیال میں وہ بوائلرز, انسولیشن, کیویٹی وارز وغیرہ سب, کیونکہ ہمارے لوگ آئے تھے سٹی سینٹر کے نزدیک, یہ پرانا ایریا ہوتا ہے, اس لیے میرے خیال میں سٹی کونسل کافی 12 ملین تقریباً پاؤنڈ خرچ کرے گی. اچھا, تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام غفارت شاہد ہے, تاریخ کشمیر کا نائب صدر ہوں. میرے جو ایشو ہے اس کی نیچر تھوڑی سی لوکل ہے, اور یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. کمیونٹی لیڈرز کی طرف سے کوئی ایسا پروجیکٹ اور پلان جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. گزشتہ کتنے عرصے سے ہمارے پاس میئر بھی رہے ہیں, کاؤنسلرز بھی رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کمیونٹی ڈائریکشن ٹورڈز ینگ پیپل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں پرسنل ایجنڈوں کے اوپر بعض اوقات باتیں ہوتی رہی ہیں, ہماری پاکستانی پالیٹکس کو انوالو کیا جا رہا ہے, اسی انداز سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ گئی ہے. میرے خیال میں یہ پروڈکٹیو وے نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈرگز کے ایشو ہماری کمیونٹی کے اندر ہیں وہ بڑے ہائی لیول کے اوپر ہیں. میں گزشتہ دنوں میں نے پریزن کے کچھ چیپلنس کے ساتھ بات کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہماری کمیونٹی کی ہے وہ پریزن کے اندر ڈرگز میں, اور پھر آپ کے پاس سیکس گرومنگ کے اندر جو ہمارا نیا سلسلہ نکلا ہے, اور کمیونٹی اس کے حوالے سے بھی کچھ کیس ہوئے. ہاں بالکل, اس میں کمیونٹی کے حوالے سے کمیونٹی کی بالکل سینس آف سائلنس رہی ہے, جو مجھے بڑی بری لگی ہے. اس لیے کہ آج اگر یہ اس کمیونٹی کے اندر آپ چاہتے ہیں اس کی بڑے مذمت ہونی چاہیے, اور اس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ساری کمیونٹی بدنام نہ ہوتی. ایک تو یہ بات دوسری, یہ ہماری اپنی کمیونٹی ہے, اب ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, ہمیں سینس آف بلانگنگ شو کرنی ہے. لوگ ہم نے واپس پاکستان نہیں جانا ہے, ہم خوابوں میں دیکھ سکتے ہیں انہیں پاکستان جانا ہے, لہٰذا جو ہم پیچھے سے بورو مینٹالٹی لے کے آئے ہیں اس کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 2, ہماری جو گفتگو کا مرکز ہوتا ہے 1500 سال پہلے, وہاں سے وہی ہسٹری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم نے ریلیونٹ بنانا ہے خطبوں کو بھی, آج کے دور کے ریلیونٹ بنانا ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں, کیونکہ ہمارے فیتھ گروپ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, پولیٹیکل جو لوگ ہیں, پلیز دس از مائی ڈیزائر کہ آپ کمیونٹی اورینٹڈ کام کریں, جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو فوکس بنایا جائے, اور ایک پروڈکٹیو سوسائٹی کے طور پر ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, آپ کو
میرا نام راجہ طاہر مسعود ہے اور میں لوکل کمیونٹی کا ممبر ہوں. میں رائٹر ہوں. میں نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں ہماری کمیونٹی پہ. اور میرے خیال میں جو بڑا مسئلہ ہے نا, جو کمیونٹی کے بڑے مسئلے ہیں, وہ ڈرگس ہے, کرائم ہے اور پریزن ہے. پہلے وہ ڈرگز پینا شروع کرتے ہیں یہ نوجوان لڑکے, پھر اس کو فیڈ کرنے کے لیے انہیں وہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ چھوٹے موٹے کرائم جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پولیس جب انہیں اریسٹ کرتی ہے, کورٹس میں لے کے جاتی ہے, تو وہ ان کو وہ پریزن میں بھیجا جاتا ہے. گھر والوں کو پتہ چلتا ہے, لیکن اس سے پہلے گھر والوں کو یا بزرگوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا یہ بچے کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. نہیں, کچھ والدین جو ہیں انہیں پتہ ہے, مگر وہ مجبور ہیں, پریشان ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں, کس کی طرف دیکھیں, کہاں سے ایڈوائس لیں. کسی دوست سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہوں گے. بالکل گھبراتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا ڈر انہیں یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ریڈ کرے گی, جس سے ان کی بدنامی ہوگی, وہ جو امسائے ہیں ان سے شرمندگی. لیکن اس سے پھر مسئلہ بڑھتا جاتا ہے, کرائم بڑھتا جاتا ہے بالکل خاموشی کے ساتھ. تو یہ رویہ آپ کی نظر میں درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں, یہ رویہ غلط ہے, کیونکہ نیشنلی اگر دیکھا جائے نا تو برٹن میں اس وقت 13% جو ہے نا وہ مسلمانوں کی پریزنرز کی آبادی ہے, اور جو پاپولیشن ہے جو برطانیہ میں ہمارے مسلمانوں کی ٹوٹل پاپولیشن وہ 5% ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 13% کہاں اور 5% کہاں. اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ارینج میرجز, وہ بھی کمیونٹی کا پیٹربرا کی بات ہی بالکل بات کر رہے ہیں. ارینج میرجز, وہ جو ٹریڈیشنل میرج تھے, وہ جو پرانے طریقے کے میرج تھے, پاکستان میں جا کے شادی کریں اور اپنے رشتہ داروں میں شادی کریں, وہ بھی سسٹم بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور تیسری جو بات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ینگ نوجوان لڑکے ہیں ان میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پایا جاتا ہے کہ برطانیہ کی فارن پالیسی پہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے برطانیہ کی فارن پالیسی پہ. وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی فارن پالیسی کچھ صحیح نہیں ہے, ایکول نہیں ہے. کچھ تو لڑکے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ڈیم آنیسٹ ڈس آنیسٹ تک بھی ہے. اسے تک تو ٹھیک ہے, غصہ تو آتا ہے, اپ سیٹ ہوتا ہے, لیکن یہ جو رویہ ہے غصے کے بعد کا, وہ تو ہر قوم میں آتا ہے جب ایک فارن پالیسی یا کوئی قومی پالیسی ٹھیک نہیں ہوتی. اب بہت ساری پالیسیاں ایسے حکومت کی ٹھیک نہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ جو بہت نوجوان غلط اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس کا جو رائٹ طریقہ ہے وہ پراپر چینلز ہیں, پراپر ویز ہیں, طریقے ہیں. جیسے اگر آپ وہ ہمارے نوجوان پراپر ویز کی طرف, پراپر چینلز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ دو جملوں میں نہیں, وہ نوجوان ہوتے ہیں, ان میں جوش ہوتا ہے, ان میں وہ جو جذبہ ہوتا ہے, اور ان میں وہ یہ نوجوان اور جذبہ, یہ جوش صرف ہماری نوجوانوں میں, دوسری قوموں میں نہیں ہوتا. میں تو اپنے نوجوانوں کی بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا ذرا زیادہ ہے, ان میں ذرا زیادہ ہے, غصہ زیادہ ہے, بات جو ہے نا غصہ زیادہ, تو اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا, ان کو سمجھانا چاہیے. چلیے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. جی سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ فیاض خان, مسلم لیگ نیون یوتھ ونگ سے میرا تعلق سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں آل یو کے. میرا سب سے جو جہاں زیادہ مسئلہ ہے قبرستان کا ہے. ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے اور ہمارا اپنا قبرستان نہیں ہے, اور اس کے لیے نہ جو ہمارے کونسلرات اور ہمارے بزرگ ہیں ان کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک اچھی جگہ پہلے پرووائڈ ہوئی تھی, مگر ہمارے آپس کے جھگڑے اور آپس کے سسٹم میں جو ہماری پاکستانی پولیٹیکل ہے وہ سسٹم ہے. تو مجھے یہاں پہ, میں دوپہر سے آیا ہوا ہوں, سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, اتفاق ہے جھگڑوں کی. جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, جو بولنا پڑتا ہے غلط باتیں بتائی جاتی ہیں. نہیں, میں نہیں کہتا ہوں, مگر ہر بندہ اپنی ایک سائڈ بچاتا ہے, مگر میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہمارے نوجوانوں کی بات کر رہے تھے. اچھا, اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ علیحدہ قبرستان کیوں چاہتے ہیں؟ بیسیکلی تاکہ میں نے یہ دیکھا ہے, میں گیا ہوں, بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ مکس قبرستان ہے اس میں بھی دفناتے ہیں. بلکہ ایک میں پچھلے دنوں گیا, دوست ہمارا تھا, انہوں نے پاکستانی قبرستان چھوڑ کے, میں جب ان کے ساتھ گیا تو وہ گوروں کے قبرستان میں دفنا رہے تھے اپنے انکل کو. تو میں نے کہا کیا وجہ؟ وہ کہتے ہیں یہ زیادہ صاف ستھرے ہیں, اس میں زیادہ جو ہے نا وہ لوگ اپنا دیکھ بھال کرتے ہیں, ہمارے قبرستانوں میں نہیں ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں, بیسیکلی ریلیجن سسٹم ہے, ہم مسلمان ہیں, اور اپنا ہم لوگ قبرستان اس لیے چاہتے ہیں کہ چلو ایک سیپریٹ ہے, جیسے ہمارا ماحول ہے, جب ہم دفنانے جاتے ہیں فیملیاں جاتی ہیں ساتھ, مثلا ہمارے پوری عورتیں بچے سارے جاتے ہیں, اور بیسیکلی یہاں سسٹم میں جو وہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے وہ نہیں دے سکتے.
सकते कि इतना टाइम हो, फिर जब गाड़ियाँ लेकर जाते हैं इस वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो बसियत हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी को हम लोग तंग ना करें, अपना एक सिस्टम अपने तरीके से। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा ये जी अपना आप तारफ कराइए अपने। Abdul Qadir Chowdhury, Chairman Fazana Medina Mosque, the largest in Peterbrough and more or less in the region. हाँ अभी एक दो लेकिन आपसे पहले कि आप अपना की बात करें, अभी इन्होंने एक बात की कि मसाजिद अपना रोल, आप मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हैं, कि मसाजिद अपना रोल अच्छी तरह यहाँ पे अदा नहीं कर रही, नौजवानों को लाना चाहिए साथ में, एक ये और एक ये इन्होंने कब्रिस्तान की बात की। ये दो सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। ये दो पहले चाहिए। पहले जो है कब्रिस्तान की जो बात है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे कई साथियों का असलियत का पता नहीं होता। हमारा यहाँ पर कब्रिस्तान है अलहदा, जहाँ पर मुसलमान को अलहदा जगह है जहाँ को अपने मस्जिदें दफन करते हैं, अलहदा है हमारा। अब वो उसकी जो मियाद है वो ख़त्म होने वाली है, तकरीबन 3-4 साल के बाद वो जो जगह है कम हो जाएगी। तो उस सिलसिले में हमारी पूरी कम हो जाएगी, ख़त्म तो मतलब ख़त्म हो जाएगी वो जगह, 4-5 साल के दौरान वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यह है कि यहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है जिसमें कि तमाम मसाजिद के नुमाइंदे शामिल हैं, और सिटी काउंसिल के साथ हमारी ये बात काफ़ी अरसे चल रही है कि हमें एक अलहदा कब्रिस्तान चाहिए। तो ये अलहदा कब्रिस्तान हमारा मुतालबा नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के लिए भी है, उनके लिए ज़्यादा है कि उनका 3 साल की मियाद है, हमारी 4-5 साल की होगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी एक सर्वे भी कई जगहों के हुए हैं कि यहाँ पर के कब्रिस्तान की जगह ली जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा बिफोर ये जगह ख़त्म होती है उसके बाद उससे पहले हमें नई जगह मिल जाएगी। एक बात ये थी कि कई एक हमारे ज़रात का बिल्कुल हमारा अलहदा हो, तो हमारा ये कमेटी का ये ख्याल था कि हमारा अलहदा होने के बजाय हमें अलहदा जगह मिलनी चाहिए, कंट्रोल सिटी काउंसिल का हो, लेकिन हमारी मुसलमानों के लिए अलहदा जगह हो जहाँ के अपने अपने तर्ज के मुताबिक दफन कर सके, हमारी बाकायदा जनाजा का हो। तो इस सिलसिले हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह चल रही है, अभी लॉन्ग टर्म है, सो इसमें परेशानी वाले की कोई बात नहीं। दूसरी बात जो कि मसाजिद का रोल के आपने बारे में, मसाजिद से किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं ये आपसे ये अर्ज़ करूँ कि पीटरबरो दूसरे शहरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़्यादा इत्फाक है, हम मिलजुल कर काम करते हैं। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम एवर हमने तमाम मसाजिद को साथ मिलकर सीरत नबी का प्रोग्राम किया, 2 साल से कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें शैया भी थे, दूसरे मसाजिद भी थे, बच्चों में हमने इनाम का मुकाबले कराए, लोग भी आए, सारे दूसरे के शैया भी थे उसमें, और जमात इस्लामी वाले भी थे, दूसरे सारे तमाम। फिर हमारी 5 मसाजिद हैं और 5 मसाजिद के बच्चे उलमाए कराम सारे एक मस्जिद में जमा कर उन्हें ये अच्छा पैगाम दिया, हम एक आए नहीं। बाकी रहा जहाँ तक ये तो अच्छी बात है कि इत्तेफाक है यहाँ पे दूसरे बिल्कुल एक ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सुनते हैं कि मस्जिद में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटरबरो एक ऐसा शहर है जिसमें कि ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक ये मसाइल है बच्चों का, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे बच्चे जो हैं उनमें ये कहते हैं ड्रग का मसला है, सेक्स रूम है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह के दूसरे शहर में मिसाल मारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में ये फ़ख्र है इस बात का, पीटरबरो उस हद तक नहीं गया। थैंक यू। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हाँ उधर मैं उसके ब्रेक के बाद आपसे you like to say something? Assalamu alaikum. My name is Shazia Bashir. I'm the Director of Community Advice Link in Peterborough. It's a very important evening for us today. We are here today irrespective of whether we follow the Labour Party or Conservative Party, whatever professional role we are in, or if we follow any of the mosques, or if we live in different wards. The most important reason that each one of us is here today is because we represent the people of Pakistan in Peterborough. Yeah, of course. I think an issue that we have day to day, and it's a very important issue because then that's the whole reason that you're here today for this talk show. And I think my main issue and the sisters that I speak to day are with Nadra, the Nadra cards, the ID cards. Apart from us having dual nationality and holding that Nadra card, what also roles and responsibilities did the government of Pakistan give us? Why cannot we be employed in them offices? We understand the system, we follow the system, and we know the British system. I mean, all of the experiences that I've heard in Birmingham, in London, in Bradford, the people are very unapproachable. They do not understand the problems that we have to go through, and we do not also understand their mentality. I'm also wanting to encourage, especially females, to be more proactive, and we will have a youth wing for overseas
to support the government of Pakistan. Overseas Pakistan. Because we need to create a positive change. Thank you. नाम ताज़ी. मेरा नाम Sana Rahman hai. I study at Iqra Academy, and I really like it at Iqra Academy and everything. I also went to, like before I went Iqra Academy, I went to mixed race primary school, and also went to mixed race secondary school for 1 year, and I compared the differences. There's not much Pakistani youth studying in Peterbrough, like everywhere in Britain. There's not very much Pakistani youth educating. I think we need to promote more education belong female and male. In like when I went to the mixed race school, Ken Stimson's, there wasn't very much Pakistanis there, and I know personally that we weren't very confident. We didn't speak out, and we were just like quiet, and it wasn't the best. There should be like youth groups for young males to go to like places and visit, and we should have more togethering, because I think education is more important, and young youth people are not really understanding that at a young age, and when they grow up they start regretting what they did in the youth. And I think it's really good if we start from a really young age to promote education and studying forward. Thank you. Yeah. Thank you. जी आप बात करना चाहते हैं. नाम मेरे हाथ में माइक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाम पूरा. मैं बीयू शेख फ्रॉम सीनियर सिटीजन सेंट्रल वार्ड. मैं सिर्फ 2 अर्ज करना चाह रहा था. एक तो ये कि मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ओवर $9.5 बिलियन हर साल रेमिटेंस होता है. उसका डेटा है बाकायदा, और वो कहाँ से आ रहा है, वो कंसंट्रेशन है उसकी. तो इनका मसला ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उसके लिए ओवरसीज कॉरपोरेशन बनी हुई है, मिनिस्ट्री भी है, सब कुछ है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रही टू दी ओवरसीज पाकिस्तानी. हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी लैंड पाकिस्तानी फाउंडेशन की बात कर, हमारा ओवरसीज पर्सन लैंड करता है और उसके लिए प्रॉब्लम लोकली शुरू हो जाते हैं, फ्रॉम एयरपोर्ट, कस्टम, टैक्सी टू द टाउन. तो एक तो ये है कि इसका डेटा बेस वो देख लें कि जहाँ जहाँ से रेमिटेंसेस आ रही हैं, अगर ह्यूज अमाउंट्स आ रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, वहाँ अपना इंडिपेंडेंट ओवरसीज फाउंडेशन का दफ्तर बनाएं और उसको मॉनिटर करें, और हमें एजुकेट करें कि ये दफ्तर है, आप इसको टेलेक्स भेजें, आप इसको फैक्स भेजें, और उसको फॉलो अप करें. और उसकी शिकायत का एक सेल होना चाहिए वहाँ कि अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वी शुड रिपोर्ट. Assalamu alaikum. मेरा नाम Raja Zanfar Ali है, and I'll speak in English. And I think I want to commemorate what Sheikh Saab said, that I think what we need to do is bring solutions. And the Pakistan embassy, once what they've done is brought in leaders, community leaders from all different towns, and shared good practices. And when they brought in some problems, we might have a problem here, somebody might have a solution in another town. Also, we need somebody like your forum actually promote good practices. We have in Britain, Pakistani, very good sports people who are in like cricket team, in English cricket team. We also have very, very good business people, but we're not actually, we're proud of being Pakistanis, but Pakistan is not doing anything for us. What we need is to actually encourage us to do better, be proud of being Pakistanis, and actually good role models, share the role models on your stage and promote them on the television, so that people, young people need to know that they need to have roots in Pakistan. Otherwise, these Pakistanis are going to be like Muslims in Kosovo. So we need to have our roots, Pakistan respecting us, and so that we can actually be proud Pakistanis. Thank you. Thank you. Thank you. मेरा नाम राशिद इलियास है. Basically, I work as a substance misuse practitioner in the Peterbrough Drugs Advisory Service. अभी भाई साहब ने मुझे नाम नहीं उनका याद रहा, वो कह रहे थे कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है, और तार साहब ने भी he highlighted the same issue. Basically, what we're doing now, we work for Peterbrough Drug Services, and we are taking an initiative to go out in the communities and address these issues. अभी बात यह है कि we need the community to respond in a positive manner. What we have a tendency to do is kind of try and deal with things in-house, because obviously when it comes to issues like drugs,
we tend to, kind of associate shame and within the community. So nobody really wants to go out there and get professional help. And we try and get our uncles and aunties and so on to deal with these things. Now, basically what we're doing now is hopefully we have a community engagement team. So we will be going out into the community, into mosques, into community centers, and trying to engage with the community. And basically what we need is support from people. उनको कहेंगे कि आप उनको अंडर कारपेट छुपाने की बजाय उसको मसला बढ़ेगा, उसको इलाज के लिए लेके जाएं या पुलिस को रिपोर्ट करें जब अभी मसला छोटा है. मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मगर वो ऐसा है कि अगर आप खुद उसको डील करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें मजीद प्रॉब्लम्स पेश होंगी, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. बिल्कुल. तो इतने जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको कांटेक्ट करें, वो आपकी मदद के लिए हैं. एंड जितने आपके यहाँ कम्युनिटीज हैं, all our children that are exposed to all the communities. आपका इदारे का क्या नाम है? CRI, Aspire Drug Services. उसका क्या टेलीफोन नंबर क्या वो? टेलीफोन नंबर मुझे 896624 कुछ इसका नंबर है. आप CRI Peterbrough Drug Service को देख सकते हैं. और जो मैं बात करने जा रहा था, बिल्कुल, कि जो है ना, जितने भी अभी कम्युनिटीज हैं यहाँ, ठीक है, आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, कुछ अच्छी हैं, हर कम्युनिटी के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. All our youth at the minute are exposed to everything that's out there. ठीक है, वो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात नहीं है. And those issues we cannot deal with because we don't have the expertise. इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इन चीज़ों को उनके साथ engage करें और उनको adopt करें and access the professional services that are available for us. Thank you. Okay. Thank you. जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद साबर है. मैं पाकिस्तान कम्युनिटी एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ. मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ अपने पीटर में मुझे 40 साल हुए हैं. मैं बहुत पुराना हूँ. ये हम कह रहे हैं हमारे बच्चे खराब हैं, हमारे बच्चे नहीं खराब हैं, हमारे बूढ़े खराब हैं. अब हकीकत ये है कि हम टाइम नहीं देते उनको. हमें चाहिए आप बच्चों को टाइम दें, फिर आपके बच्चे आपकी सुनेंगे. मैं नेगेटिव पास नहीं जाना चाहता, पॉजिटिव की बात करें. हमारे डॉक्टर भी हैं बच्चे, हमारे टीचर भी हैं, हमारे जिनके पेरेंट्स तवज्जो देते हैं. जी हाँ, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं. ये आप जियो वाले यहाँ आए, ये हमारे लोकल इशू हैं, इसे हम डील करेंगे. हम ये मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है. हमारे अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्या उनके लेकिन हम उनकी भी बात करनी है ना, जो नहीं पढ़े लिखे या जो इस रास्ते पे नहीं चल सके. मेरे भाई वहाँ उनका भी हाल निकले. पेरेंट्स के लिए आप मशवरा दे के वो क्या करें, बच्चों के साथ कैसे कोठियाँ बनाने छोड़ दें. इन लोगों ने नहीं जाना, यहाँ काम करो, इस पर तवज्जो दो, इन पर ट्यूशन लगाओ, इन पर टाइम दो. ओवर टाइम जो है लगाते हैं. हाँ, इन ओवर टाइम बच्चों को टाइम आएगा आपको. थैंक यू. मेरा नाम साबिर खान है. मसाजिद की बात हुई है, बच्चों की बात हुई है. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस शहर में काफ़ी फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुकी हैं. रिसेंटली एक कोऑप का स्टोर था, वो यहाँ से 20 मील उन्होंने वहाँ उसको नया बनाया है, क्योंकि यार रेट्स बहुत ज़्यादा है. इस जो हमारा जो पीटीब्रो सिटी काउंसिल है ना, ये रेट्स बहुत चार्ज करते हैं. अभी मैं आ रहा था तो दो तीन दुकानें यहाँ खाली पड़ी हैं सिटी सेंटर में. एक बात ये. दूसरा, जो मसाजिद का रोल के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों के, आप देखें 7.5 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, उसके बाद घर आता है, फिर वो मस्जिद में जाता है, 1 घंटा वहाँ वो पढ़ता है या 2 घंटे पढ़ता है, फिर वो घर आकर टीवी देखने लगता है. तो जो मस्जिद का स्कूल का 7.5 घंटे और टीवी का इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा है ना कि मस्जिद का 1 घंटा. दूसरा जो इन्होंने कहा है कि इसमें भी ये भी सच है कि हम बच्चों को इतना टाइम नहीं देते. तो उसकी वजह यह है कि रेस्टोरेंट, टेक वेज और टैक्सीज अनसोशल आवर वर्क. और ग्रोसरी की दुकान भी तो 24 वो भी 18 घंटे 14 घंटे करते हैं, सुबह 6 से रात 10 बजे तक. तो थैंक यू. जो अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शाहिद हुसैन है. मैं पाकिस्तान कम्युनिटी एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं एक लोकल रेजिडेंट भी हूँ सेंट्रल वार्ड का. I think our biggest problem is identity crisis. We need to wake up. Are we British? Are we Pakistani? Our youth don't want to go to Pakistan because there's no electric, there's no gas, there's corruption. We get mobbed at the airport. Reality check. So we've got an identity crisis. Either we want to be Pakistani, Kashmiri, Mirpuri or British.
So we want to jump on every single wagon. Our kids want to go to Morocco, they want to go to Dubai, they don't want to go to Pakistan. So why are we building these big houses for them? लेकिन जब पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, तो क्रिकेट मैच को देखते हैं और उसी को ख्वाहिश होती है, इसके बावजूद होती है कि नहीं होती? होती है, लेकिन वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते. यही प्रॉब्लम है. जो भी हुकूमत आती है ना, they don't appreciate us. Confused. Our children are confused. The big issue we have is parents. तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चे को अगर आप माँ बाप को अपने गिरबान भी देखना चाहिए. कितना टाइम बच्चियों पे देते हैं. बच्चियों पे कोई टाइम नहीं देते. बच्चे कर रहे हैं. बच्चियों में is a future as well. You need to look after your daughters as well. You know, how much time are you giving your children? You know. Thank you. सर मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है. तो मैं जो हमारे डिप्टी लीडर हैं नदीम साहब, उन्होंने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये प्रोग्राम का इत्माम किया है और हमें दावत दी है और हमको बोलने का मौका दिया, शुक्रिया अदा कर दिया. अच्छा ये बताइए कि इन्होंने जो बात की है कि पेरेंट्स जो है कोठियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं, ओवर टाइम लगाने में मसरूफ़ हैं, माल बनाने में मसरूफ़ है, बच्चों को टाइम नहीं देते पीटर्सबर्ग वाले, ये क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि हर वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को टाइम दें. ये इंतहाई ज़रूरी है. तो अगर बच्चों को टाइम देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि बच्चे उनके कामयाब होंगे. तो मैं तो एक और अपने ज़हन की बात करना चाहता था. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कौंसलर हज़रात हैं जिनका तल्लुक़ लेबर पार्टी से या टोरी पार्टी से, जब भी कोई कम्युनिटी का मसला हो तो इनको एक होना चाहिए. ये कम्युनिटी का मसला है तो ये अपने नंबर की बात करते हैं, ये एक कोई के बात नहीं करते, सियासत करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, हम कामयाब हो जाए और दूसरा कामयाब न हो. चलिए बाद में अपनी बहनों से सवाल करेंगे कि ये जो हैं खुसूसी तौर पे वालिद अपने बच्चों को पूरी तरह टाइम क्यों नहीं देते. आप बात करना, ये बात सुनने जरा. Assalamu alaikum. मेरा नाम स्मीना अजीज है. I will be talking. I have a few hats that I'm going to talk about. I think. ये भी आपने यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ ताकि हमारे प्रोग्राम का भी ये पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है, थोड़ा वक्त है कि अभी कुछ यहाँ पे लोगों ने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो जनरेशन गैप जो है ना नौजवानों से कटे हुए हैं, वो उनको टाइम नहीं देते, इस वजह से वो नौजवान जो हैं वो तालीम से पीछे रह जाते हैं या क्राइम की तरफ जा रहे हैं. तो इसकी क्या वजह है कि पेरेंट्स टाइम क्यों नहीं दे पाते? I think as other people have said कि एक identity crisis है. पाकिस्तानी पेरेंट्स ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है, एक पेरेंट पाकिस्तान से एक यहाँ से. अब जो नई नस्ल है उनकी शादियाँ यहाँ पे हो रही हैं और एक तो लैंग्वेज बैरियर होते हैं और ज़्यादातर ज़ुबान उर्दू पहाड़ी पंजाबी घर में बोली जाती है. एक दूसरे को समझ पाते तो बच्चे को क्या समझाएंगे? समझ पाते हैं इन द सेंस के एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है. ज़्यादातर घर में मातृ ज़ुबान बोली जाती है जिससे जो आइडियाज़ बच्चे फॉर्म करते हैं वो नहीं होते. बच्चों को रीडिंग नहीं की जाती. जैसे कि रात को कहानियाँ सुनाते. मैं 15 साल आज़ाद कश्मीर में रही हूँ. वहाँ पे पेरेंट्स का जो बच्चों के साथ रवैया है वो टोटली डिफरेंट है. यहाँ का टोटली डिफरेंट है. कमरे से बाहर निकाल देते हैं बच्चों को. कमरे से बाहर नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं. वहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि आगे जाके बच्चों ने जॉब लेनी होती है अपने मेरिट पे. यहाँ पे माजी में ये होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे वापस आते थे, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता था. लेकिन आजकल के दौर में कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक दिस गाइडेंस इज़ लैकिंग. स्कूल की तरफ से स्कूल वाले कहते हैं कि पेरेंट्स द पाकिस्तानी कम्युनिटी पेरेंट्स आर हार्ड टू रीच. ये हमारे बच्चों को हार्ड टू रीच करार दिया जाता है क्योंकि जब भी पेरेंट्स इवनिंग होती है, जब भी कोई मसला होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है. और जैसे पेरेंट्स ने कहा है कि टैक्सी पे काम करते, रेस्टोरेंट्स टेकवेज वगैरह है, टाइम नहीं मिलता. लेकिन हमारी जो मुसलमान होने के नाते फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हमारी औलाद क्योंकि ये आइंदा की नस्ल है. जो क्राइम के बारे में बात हो रही है या अदर इश्यूज हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद आवर चिल्ड्रन.
when a change comes from within a community, it comes from within a community, and change has come within this community. हमारी बहुत positive aspects हैं, लेकिन I think as parents, messages and the Prophet, peace be upon him, we should emulate his example and give time to our children. हमारा कोई excuse नहीं है कि हमने पैसे कमाने अपनी औलाद को देने हैं, because materially हम दे देते हैं. चलिए, बहुत अच्छी आप बात कर रही हैं. अभी प्रोग्राम का ये वक्त ख़त्म हो रहा है. अगले प्रोग्राम के लिए हम आपसे ही दोबारा बातचीत का आगाज़ करेंगे. तो से बात नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे पीटरबरा में, और इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आप देख सकेंगे आइंदा हफ्ते. इफ्तिखार कैसर को इजाज़त दीजिए.